Yes, students, today we are going to start with the revision portion of bills of exchange. What is the meaning of bills of exchange? Bills of exchange comprises two bills which we exchange, and that bills we will be using these terms, that is bill receivable, two types of bills which we call bills receivable and bill paid. So these bills are being exchanged whenever the credit transactions are there in the business. For example, you sell the goods on credit basis and your debtor tells you that he will be making the payment within 1 month or within 2 months or within a week, etc., etc. In that case, you will not be trusting upon him on his oral promise. You need a written promise from his side. So you write a BR. आप एक BR लिखेंगे, being a seller. Seller writes a document whereby he writes a wording, I will pay to you this much amount after the expiry of this much time period, and this document is being sent to the purchaser. Purchaser will read the conditions of that bill and he will be putting his sign, and after putting his sign he will be returning that bill to again the seller. Okay. In that case, seller will be keeping that bill with him as a proof that this person has promised me. So that written proof being signed by the purchaser is sent back to the drawer himself only. That bill we call bill receivable. And from seller's point of view, it is an asset. And हम एक कॉपी, उसे डुप्लीकेट कॉपी किसको दे देते हैं? उसको बोलते हैं कि ओरिजिनल कॉपी मेरे को भेज दे, डुप्लीकेट कॉपी अगर तूने रखनी है तो यू कैन कीप विद योरसेल्फ. तो परचेजर के लिए ये क्या है? लायबिलिटी है. For purchaser, it is a liability. So in purchaser's book, we will be calling it bills payable. In seller's book, we will be calling it what? Bills payable. Right. This we will be doing in this chapter. Parties involved: drawer, drawee, pay, endorser, endorsee. Who is a drawer? Drawer is basically the seller who draws the bill, who writes the bill. And that bill is being sent to the purchaser. After reading that content of the bill, he will be putting the sign and he will say accepted. And after acceptance, that bill is again being sent to the drawer. So drawer आमतौर पे कौन होगा? Seller होगा. So whenever you will be attempting the numerical question, you need to identify who is drawer and who is drawing, because you are supposed to pass the journal entries in the books of drawer and drawing. Let me make this chapter more easy for you. Basically, only two parties transactions will be asked on the paper, but pay के हिसाब से जो entries होती हैं या endorser और endorsee की होती हैं, that can come in 1 mark, etc. In any way, he can ask कि थर्ड पार्टी की बुक में कोई एंट्री बताओ, which account is to be debited, which account is to be credited. But अगर आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे तो दो ही पार्टीज की बुक में आपसे एंट्री पूछी जाएंगी. One is for drawer and other is for drawee. So who is a drawee? Drawee is a person who accepts the bill, and always it is a purchaser. Purchaser will read the content of the bill and he will be accepting that bill. In that case, he will be returning back the bill after putting his sign to the drawer. तो drawee कौन है? हमारा purchaser है. Drawer कौन है? Seller है. और ये दोनों के बीच में जो transaction हो रही है, that is exchange of goods, and they are exchanging the bill. Who is exchanging the bill? That is purchaser and seller. They are exchanging the bill. Okay, so that's why the chapter's name is bills of exchange. Then we have the pay. Pay is a person who is actually receiving the final payment on the maturity. जब बिल की maturity date आती है या due date आती है, उस टाइम पे जो बंदा पेमेंट रिसीव करता है उसे क्या बोलते हैं? पे. So pay word has been made with the word payment. Who is going to receive the final payment at the time of maturity of the bill, that person we call what? Pay. Endorser. Sometimes your drawer transfer his bill to another person. Like A is a drawer और A ने आगे C को पैसे देने हैं. So C is the creditor to A. So A will be transferring his BR to C. In that case, A becomes endorser and C becomes endorsee. Means who transfer his bill, वो endorser है, and to whom the bill is being transferred, वो endorsee. So these are 5 parties maximum you can see in your book. And one thing more I must clear here, that if the bill is being retained by the drawer with him only,
in that case drawer himself will become pay. लेकिन अगर ड्रॉर ने अपना बिल किसी को एंडोर्स कर दिया है या बैंक से डिस्काउंट करवा लिया है तो उस केस में बैंक और एंडोर्सी कैन बिकम द पेई, बिकॉज जब बिल की मैच्योरिटी डेट आएगी तो बिल आपकी खुद के पास नहीं है, ड्रॉर के पास नहीं है। अगर डिस्काउंट करवाया है तो बैंक पेमेंट रिसीव करेगा, अगर आपने एंडोर्स कर दिया है तो एंडोर्स पेमेंट रिसीव करेगा। तो पेई कैन गेट चेंज if the bill is being discounted from the bank or if the bill is being endorsed to any third party. So these are certain things relating to the parties. Now we have few more terms which we will use in theory, and the theory question can be framed out of that. That is days of grace. Days of grace. Days of grace, these are the 3 additional days which are being given to the drawee to make the arrangement of the final payment. उससे पहले मेरे को आपसे डिस्कस करना है tenure of the bill. Tenure of the bill means the time period for which the bill has been made. Usually it can be of 2 months, it can be of 3 months, and sometimes it can be 4 months. And how the time period is being counted, that is also very, very important, because you have to fill the date column in your solution also. When you will be solving the numerical question of this chapter, आपको date का column journal में बनाना है, and thereby you will be writing the dates. For example, we are selling the goods on 1st January. ठीक, and on the same day the bill is being drawn. 1st January को ही सामान की सेल हुई, क्रेडिट पे, and bill is being drawn. But 5th January को हमारे ड्रॉई ने इसे एक्सेप्ट किया, तो जिस दिन हमारे ड्रॉई ने एक्सेप्ट किया उस दिन आपने एंट्री करनी है BR अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉई। सेल की एंट्री आपकी 1st जनवरी को होगी, लेकिन बिल की एक्सेप्टेंस वाली डेट को आप एंट्री करेंगे BR अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉई। और देन आई एम टेलिंग यू, मान लो 3 मंथ्स का टाइम पीरियड है, so from the date of acceptance of the bill you will be calculating the days. 5th जनवरी से लेके 5th फरवरी तक 1 महीना, 5th मार्च तक 2 महीने, 5th अप्रैल तक 3 महीने, 5th अप्रैल के बाद 3 दिन आपने एक्स्ट्रा और ऐड करने हैं। इट मींस की मैच्योरिटी डेट ऑफ द बिल विल बी 8th अप्रैल. So in that way you will be calculating your maturity date of the bill. और जब बिल की पेमेंट होगी, एंट्री आएगी कैश अकाउंट डेबिटेड टू BR, तो आप 8 अप्रैल को लास्ट में एंट्री करोगे, दैट इज योर मैच्योरिटी डेट. तो ड्यू डेट एंड द मैच्योरिटी डेट का मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए. दिस इज अ डे और दिस इज अ डे व्हेन द बिल इज बीइंग फाइनली पेड बाय द ड्रॉई टू द ड्रॉर एंड हूसोएवर इज होल्डिंग द बिल. ठीक है, अगर ड्रॉर के पास बिल नहीं है तो वो बैंक को पेमेंट करेगा या एंडोर्सी को पेमेंट करेगा. तो जिसके पास बिल होगा, एज पर द ऑर्डर ऑफ द ड्रॉर, ड्रॉ इज मेकिंग द पेमेंट ऑफ द बिल एज पर द conditions being agreed upon the bill or conditions being agreed between them. जो भी conditions और शर्तें उन्होंने रखी हैं उन शर्तों को फॉलो करते हुए ड्रॉई हमारे ड्रॉर को या किसी को भी होल्डर को पेमेंट करेगा. किसके ऑर्डर पे? ड्रॉर के ऑर्डर पे. So these are the few terms. One thing more, if the due date of the bill falls on a gazetted holiday, ठीक है, like 26 जनवरी को आ रही है या 15 अगस्त को आ रही है, इन हॉलीडेज के बारे में हमें पहले से पता होता है. फॉर एग्जांपल 15 अगस्त को अगर आपकी ड्यू डेट आ रही है, देन पेमेंट इज टू बी मेड ऑन द प्रीसीडिंग डे. आपको 14 अगस्त को पेमेंट करनी पड़ेगी. बट इफ द ड्यू डेट फॉल्स ऑन एन इमरजेंसी हॉलीडे तो आप नेक्स्ट वर्किंग डे में पेमेंट करोगे. फॉर एग्जांपल 20 अप्रैल को ड्यू डेट आ रही है और उस दिन हमारा इंडिया बंद की अनाउंसमेंट हो गई. ठीक है, इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर हो गई, हमारा ड्रॉई पेमेंट नहीं कर पा रहा, देन ही विल बी मेकिंग द पेमेंट ऑन द वेरी नेक्स्ट वर्किंग डे, दैट इज ऑन 21 अप्रैल. राइट, 20th को अगर स्ट्राइक अनाउंस हो गई है, पूरे ऑल इंडिया की स्ट्राइक है, ड्रॉई इज नॉट मेकिंग द पेमेंट और नॉट इन अ पोजीशन टू मेक द पेमेंट, इन दैट केस ही विल बी मेकिंग द पेमेंट ऑन नेक्स्ट डे. For example, if your due date falls on Sunday, then also you will be making the payment on Saturday. आप preceding day को ही क्या करोगे? पेमेंट करोगे. So these are certain rules while calculating your due date of the bills, which you need to read from your book thoroughly. He made a separate box for the calculation of these due dates and what are the rules to follow that are also being mentioned there, that you will be prepared for your theory purpose. So इस chapter में theory plus practical दोनों ही important है. Right. So let me start with the numerical portion. चाहे क्वेश्चन में वो लिखे promissory note, चाहे वो क्वेश्चन में लिखे bills of exchange. Yes, one thing more I want to discuss with you. What is the basic difference between promissory note and bills of exchange? Promissory note और bills of exchange के practical questions में कोई भी difference नहीं है, लेकिन parties का difference है भाई. Bills of exchange is being made by the seller, but promissory note is being made by the purchaser. तो वहां पे पार्टी का नाम मेकर है. Who is the maker?
Maker is a person who purchases the goods on credit basis. Then we are having this again pay. ठीक है, pay is a person who is going to receive the final payment. तो वहां पे maker और pay रहता है, यहाँ पे drawer, drawee और pay रहता है. This is the basic difference. अदरवाइज प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में कोई भी रेफरेंस नहीं है. अगर क्वेश्चन में प्रोविजरी नोट वर्ड भी लिख देता है तो भी आपने एंट्री में उसे बी आर और बीपी ही क्या करना है, ट्रीट करना है. So let me start with the first topic of the chapter, that is when the bill is being retained. When the bill is retained by drawer till maturity, this is retained by drawer till maturity, means maturity तक bill drawer ने अपने पास ही रखा. He has not transferred that bill to anyone. So I will be dividing the whole board into two parts. This is in the books of drawer, this is in the books of drawing, right? So यहाँ पे लिखते हैं in the books of drawer. Here it is drawing, right? So let's start with. First entry will be of credit purchase and credit sale. So drawer is a seller. He is going to sell the goods and he is going to purchase the goods. आपने पूरा फॉर्मेट बनाना है भाई जर्नल का. What entry he will pass? Drawee account debited to sales. पहली entry sale की. If he is selling the goods, so simultaneously I will be telling you in the books of drawee, drawee is going to purchase the goods. So अगर वो उधार पे बेच रहा है तो he is buying on credit basis. इसके लिए परचेसेस क्या होगा, टोटली रिवर्स चलेंगे भाई. इफ सेल उसकी इनकम है तो परचेसेस का एक्सपेंस है. परचेसेस अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉ. ठीक, उसके बाद वो उसको कहता है कि मैं बीआर एक लिख के भेजूंगा, तो पढ़ लेना और साइन कर देना. तो क्वेश्चन में यही लिखा होता है, ड्रॉई एक्सेप्टेड द बिल एंड रिटर्न्ड इट टू द ड्रॉर. सो व्हेन ही रिटर्न्स बैक द बिल वी कॉल इट बिल्स रिसीवेबल. नोबडी विल राइट बीआर, एब्रिविएशन कोई भी नहीं लिखेगा पेपर में. Bills receivable word होगा to what, who is giving, drawing. So debit what comes in real account का rule लगा, credit the giver personal account का rule. So drawee is sending back the bill to the drawer, drawee is going to be credited in the entry and BR is coming. और BR being an asset, दोनों rule आप apply कर सकते हैं, कोई भी उसमें से याद कर लीजिए. BR being an asset is to be debited और debit what comes in real account का rule लग रहा है. ठीक है, और इसके लिए बीपी क्या है, लायबिलिटी है. सो इट इज डेट assured that bills payable is going to be credited in his books of accounts, right? And who is going to receive that BP from him? Drawer को. ये अपने ड्रॉअर को बिल एक्सेप्ट करके भेज रहा है, तो ड्रॉअर इसकी बुक्स में डेबिट होगा और ड्रॉअर की बुक्स में ड्रॉई क्या होगा, क्रेडिट होगा. अब मैच्योरिटी डेट आई, ठीक है, जो भी डेज ऑफ ग्रेस ऐड करके आपने डेट बना रखी है उस दिन बिल की पेमेंट होगी. उसने एक लाइन लिखी होती है क्वेश्चन में, द बिल इज मेट ऑन मैच्योरिटी. इट मींस कि ड्रॉ इज मेकिंग द पेमेंट एंड ड्रॉअर इज रिसीविंग द पेमेंट, राइट? सो व्हेनेवर ड्रॉअर इज रिसीविंग द पेमेंट, कैश विल कम टू हिम. ठीक, कैश या चेक, अगर चेक लिखा है तो यू विल बी राइटिंग विद बैंक. अगर कैश लिखा है तो आप कुछ नहीं लिखा तो यू कैन अज्यूम इट ऑन कैश. ठीक, लेकिन मोदी गवर्नमेंट के टेन्योर में हम लोग ये मान के चलते हैं 20,000 से बढ़ के कोई भी ट्रांजेक्शन होगी तो वो चेक के थ्रू है. तो बेटर है अगर 20,000 से ज्यादा अमाउंट है आप चेक की हेल्प से ही उसे ट्रांसफर करिएगा. So this is what I am again repeating, either cash is to be debited or bank is to be debited to what, BR. So BR जब भी mature हुआ, BR is to be credited and cash or bank is to be debited. अब इसमें रिवर्स करेंगे, he is making the payment of a liability, so he will be writing bills payable account debited. Liability जब कभी भी कोई mature होती है तो हम उसे डेबिट करके खत्म करते हैं. Then cash is going out. अगर कैश में पेमेंट करी है तो कैश को क्रेडिट करिए, अगर चेक के थ्रू पेमेंट करी है तो बैंक को क्रेडिट करिए. तीनों में नरेशन लिखना नहीं भूलेंगे भाई. बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, फर्स्ट की नरेशन. हाँ जी, बीइंग बिल ड्रॉन, बीइंग बिल एक्सेप्टेड, ही इज एक्सेप्टिंग द बिल एंड ही इज द पर्सन हु इज ड्रॉइंग द बिल. बीइंग बिल मेट ऑन मैच्योरिटी, बीइंग बिल पेड ऑन मैच्योरिटी. ठीक है, तो तीनों में आपने नरेशन भी लिख के आनी है. दिस वाज योर फर्स्ट केस. Now let me come to the second case, which we call discounting of the bill by the drawer. Sometimes what happened, your drawee promised with you that he will be making the payment after 3 months. For example, I am taking my imaginary example. Drawee made promise with the drawer that he will be making the payment to the drawer after 3 months, right? So after 3 months is a long time period from drawer's point of view.
sometimes he may need the money before 3 months. In that case, he may take the help of his bank. So bank is providing you additional services. आप अपने बैंक को अपना BR हैंड ओवर करोगे और बदले में टाइम से पहले बैंक आपको मनी दे देगा. That is what we call discounting of the bill. You go to your bank and you just ask your bank for making the early payment of the bill. So bank will be keeping that BR with itself and bank will be making the payment before the maturity date to you as a client. Okay, that is what we call discounting of bill before maturity. I should repeat one line again, like डिस्काउंट करवाने की एंट्री कोई भी नहीं होगी ड्रॉय की बुक्स में. ड्रॉय को कोई फर्क नहीं पड़ता. ड्रॉय ने तो अल्टीमेटली मैच्योरिटी पे पेमेंट करनी है, चाहे आप खुद ले लो चाहे बैंक ले ले. आप सिर्फ ड्रॉय को टेलीफोनिकली और मेल वगैरह सेंड करके आप उसे इन्फॉर्म करोगे कि दिस टाइम ऑन मैच्योरिटी ऑफ द बिल यू विल मेक द पेमेंट टू माय बैंक. Just deposit the money to the bank, or bank authorities will come to you for collection of money from you. So accordingly, he will be following the instructions of his drawer. He is supposed to, right? So entry में क्या change आएगा? Discount की entry सिर्फ drawer की books में होगी, in the books of drawer. क्या entry होगी? Bank account debited, discount account debited. What is going out? आप बैंक को क्या दे रहे हो? अपना bill. So credit what goes out. You are handing over your bill to your bank. For example, bill was of ₹2000 और बैंक कहता है मैं 50 रुपए डिस्काउंट के काटूंगा. So bank will give to me net amount that is 1950 and this entry will obviously being done with the bank because the money will be transferred to your bank account. Bank will never make the payment in cash. ठीक है? So this thing you have to keep in your mind. No entry is to be passed in the books of drawing. Drawing कोई भी entry नहीं करेगा डिस्काउंट की. अब ऐसे क्वेश्चन में अगर उसने लास्ट में लाइन लिखी है द बिल इज मेट ऑन मैच्योरिटी, तो मैच्योरिटी की एंट्री हमारा ड्रॉर नहीं करेगा लेकिन ड्रॉई जरूर करेगा. तो ड्रॉई क्या एंट्री करेगा मैच्योरिटी की? सेम एज यूजुअल. बीपी मींस बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिटेड ईदर इन कैश और इन बैंक. ठीक है, चाहे चेक के थ्रू कर दीजिए चाहे कैश के थ्रू कर दीजिए. So hereby in this case one more party has been involved, that is bank. So in this case bank becomes pay. तो बैंक अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगा? जब बैंक अपने क्लाइंट का बिल क्या करके देगा? डिस्काउंट करके देगा. सो लेट मी टेल यू दैट दिस कैन बी आस्क्ड इन 1 मार्क. वैसे मैंने बोला पेपर में 2 पार्टीज की बुक्स ही आएंगी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में, बट इन थ्योरी क्वेश्चन ही कैन फ्रेम द क्वेश्चन इन एनी वे, इन एमसीक्यू, इन ट्रू फॉल्स एटसेट्रा इन एनी वे. So for that purpose you should be familiar what is to be debited and what is to be credited. So bank is giving the bill to you. बैंक के लिए डिस्काउंट क्या है? इनकम है. आपके लिए क्या था? एक्सपेंस था. बैंक अपने कस्टमर को डेबिट करेगा. फॉर एग्जांपल कस्टमर का नाम ए है तो वो ए को डेबिट कर देगा टू डिस्काउंट. डिस्काउंट उसके लिए क्या है? इनकम है. बैंक विल बी क्रेडिटिंग हिज कस्टमर और बिल डिस्काउंटेड को वो क्या करेगा? डेबिट. बिल डिस्काउंटेड जिसे हम बीआर कहते हैं और हमारा ड्रॉई बीपी कहता है, बैंक उसे बिल डिस्काउंटेड कहता है. टू डिस्काउंट टू व्हाट? कस्टमर्स ने. सो क्रेडिट द गिवर. बैंक के लिए वो कस्टमर क्या है? इज टू बी क्रेडिटेड. लेट मी कंफर्म इट फ्रॉम यू फ्रॉम योर बुक. व्हाट एंट्री बैंक इज गोइंग टू पास इन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स? इट्स ऑन पेज नंबर, लेट मी टेल यू. बैंक की बुक्स में yes, whatever I wrote that is correct. bill discounted is to be debited. ठीक है, बैंक के लिए bill discounted क्या है? डेबिट होगा. डिस्काउंट बैंक के लिए क्या है? इनकम है. और कस्टमर इज द गिवर. कस्टमर आपको बिल दे रहा है, क्रेडिट द गिवर. और जब मैच्योरिटी आ जाएगी ड्रॉई विल मेक द पेमेंट टू बैंक. तो बैंक को कैश मिलेगा. बैंक अपनी बुक में कभी भी बैंक नहीं लिखेगा, कैश मिलेगा. किसके बदले में मिलेगा? बिल डिस्काउंटेड के बदले. So bill discounted in that case is to be credited. Means जो एंट्री हमारा ड्रॉर किया करता था मैच्योरिटी की उसे ही थोड़ा सा मोल्ड कर दिया. हमारे ड्रॉर को अगर पेमेंट मिलती मैच्योरिटी पे तो पहला केस रिटेनिंग वाला मैंने आपको भी समझाया. ड्रॉर क्या एंट्री करता है? कैश अकाउंट डेबिटेड टू बीआर. ठीक है, तो बैंक की बुक्स में बीआर का नाम चेंज करके उसे क्या बोलता है? बैंक एक सुफिक्स पीछे लगाता है बिल के साथ, दैट इज व्हाट बिल डिस्काउंटेड. So whatever is BR for the drawer, whatever is BP for the drawee, same document is being named as bill discounted for the bank, from whom our drawer gets the bill discounted. So this was your second case, right? So one more party has been involved. Now come to the third case, when the bill is being endorsed.
अभी मैंने बताया एंडोर्स के केस में हमारे पास दो पार्टीज आती हैं, वन इज एंडोर्सर एंड अदर इज एंडोर्सी. So what happened in that case? For example, our drawer is liable to make the payment to someone. So in that case, he asked to his creditor that I am not in a position to make the cash payment to you. Better to take my BR. After these many months, you will be able to get the money from this BR. And accordingly, the drawer will be informing to drawee that no need to make the payment to me on maturity. Rather, this is the person's name, this is his address, this is his account number. Just transfer the amount to his account. Okay, so as per the instructions of drawee will be making the payment to endorsee. Okay, so we will be discussing about that. So in that case, again, we will be having three parties in the question. One is drawer, another is drawee, and one thing more, let me write the topic's name on the board first. That is endorsement of bill. Endorsement simply means transfer of the bill. So this bill is being transferred by drawer to someone else. That's why the third party is coming into existence, right? So this is what endorsement of bill. The person who transfers the bill, that is always the drawer, and simply I will be calling him endorser. And the person to whom the bill is being transferred, that is endorsee. और आम तौर पे वो क्वेश्चन में हमारे drawer का creditor हो, means our drawer is liable to pay to someone. So instead of making the payment in cash to that person, he just hands over his BR to him or her, right? So let's start. Again, I must repeat the same sentence. There will be no entry of endorsement of bill in the books of drawee. Drawee हमारा कोई भी entry नहीं करता, ना ही discounting of the bill की, ना ही endorsement की, और अभी मैंने court case करवाना है bill sent for collection. So drawee is not related about these transactions being done by drawer. He is just related to accept the bill and to make the payment of the bill at the time of maturity. That's it, right? So again, the question is same. Bill is being drawn and drawee is accepting it. This is for drawer. ये drawer की books हैं, ये drawee की books हैं, और ये endorsee की books हैं. यहाँ endorsee का मतलब pay भी तो हो सकता है. So he is going to receive the final payment at the maturity. जैसे इससे पहले वाले केस में bank was the pay. And hereby who is the payee? The person to whom the bill is being transferred. ठीक है. So let me name them. For example, drawer का नाम है अमर, drawee का नाम है अमित, और हमारे एंडोर्सी और payee का नाम है अक्षित. ठीक है, अब नाम से आपको ज्यादा कंफर्म हो जाएगा. So he is accepting, Amit is accepting the BR. अमर के बुक्स में होगा BR account debited to अमित. अमित के बुक्स में क्या होगा? Yes, अमर account debited to BP. अभी तक अक्षत का तो नाम ही नहीं आया. अक्षत तो अभी तक कोई एंट्री नहीं करेगा. अभी तो ये ट्रांजैक्शन इन दो पार्टीज के बीच में थी. ठीक है, दिस पार्टी वाज एक्सेप्टिंग द BR एंड ही वाज सेंडिंग द BR टू अमर. ठीक है, अमर के पास BR आ गया, अमित ने उसे भेज दिया. अब अमर क्या सोच रहा है कि मेरे को मैच्योरिटी पे पैसे नहीं चाहिए, मैंने अक्षत को पैसे देने हैं, मैं अक्षत को BR दे दूंगा. सो दिस इज द एंट्री फॉर एंडोर्समेंट. अक्षत मींस पे, एंडोर्सी to what BR. तो लॉजिक देखिए, he is the receiver, debit the receiver, पर्सनल अकाउंट का रूल लगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट रियल अकाउंट का रूल लगा. कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे ड्रॉई को, चाहे बिल आप अपने पास रखो, चाहे आप डिस्काउंट करवाओ, चाहे आप एंडोर्स करो. सो ड्रॉई इज लीस्ट बॉदरिंग अबाउट इट. ठीक है, तो एंडोर्समेंट की एंट्री कभी भी ड्रॉई नहीं करता. नाउ व्हाट एंट्री अक्षित विल डू? अक्षित के पास BR आ रहा है. ठीक है, वो अगर क्रेडिट कर रहा है अमर, तो अक्षित इसे क्या करेगा? डेबिट करेगा. एंडोर्समेंट के केस में who is giving? Amar is giving. अब maturity date आई, who will make the payment? Drawee will make the payment and Akshit will receive it. यहाँ पे अमर सीन में नहीं आएगा क्योंकि अमर के पास तो BR ही नहीं है. जिसके पास BR है, he or she is authorized to make the payment, receive the payment, and he is supposed to make the payment. ये पेमेंट की वही एंट्री करेगा जो सारे केसेस में करता है, BP to cash या बैंक, दोनों में से कुछ भी. Whatever he will be suggesting in the question, and you have to assume in that case कि आपने चेक के थ्रू करनी है कि कैश के थ्रू करनी है पेमेंट. So he will be receiving the payment. Who? That is Akshit. Cash account debited और बैंक account debited to BR. इसको BR मतलब जो एंट्री हमारा ड्रॉर किया करता था बिल की मैच्योरिटी पे मिलने की एंट्री, बिल की पेमेंट रिसीव करने की एंट्री, जो ड्रॉर किया करता था वही अब क्या करेगा? एंडोर्सी करेगा या पे करेगा. तो ड्रॉर इज नाउ आउट ऑफ सीन.
Now this transaction of meeting the bill on maturity is only between your drawee and pay. ठीक है, so pay is a person, again I am repeating, pay is a person who is supposed to receive the final payment at maturity. Pay word has been taken from payment, right? Who is going to receive the final payment at maturity? That person we call pay. So these are the first three cases. Now what happens in case of a trader who is having a lot of or abundance of credit transactions? For that it becomes very difficult to collect the bill, because for example उसके पास 100 bills है, ठीक है, अब 100 bills को collect करना उसके लिए cumbersome job है. In order to avoid his botheration, he takes the help of his bank. वो अपने बैंक को उन बिल्स को मेच्योरिटी से 2-4 दिन पहले हैंड ओवर कर देता है. 100 बिल्स हैं, किसी की अमाउंट 200 है, किसी की 500 है, किसी की 700 है, like वाइट वेरी माइनर अमाउंट. लेकिन he can't afford to collect all the bills on his own. He just needs the help of a collecting agency. तो बैंक कुछ कमीशन लेके, कुछ चार्जेस लेके आपके बिहाफ के ऊपर आपके बिल्स की कलेक्शन करता है. कई बार आपने सुना होगा ना कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट करने के लिए भी सम पर्सन्स दे कम टू योर होम एंड दे सुजेस्ट कि आप हमें 10 या 15 रुपए दे देना एक बिल के पीछे, वी विल बी डिपॉजिटिंग योर बिल. ठीक है, तो हो सकता है ये इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने कलेक्टिंग एजेंट अपॉइंट किए हो या कुछ प्राइवेट पर्सन भी हो सकती है. So such type of services bank also give you. Bank will be rendering the services and bank will be telling you that we will be collecting your bill and in return we will be charging certain commission. So that case we make that is bill sent for collection few days earlier or 1 or 2 days earlier than the maturity. Our drawer hands over the bill to the bank for collection purpose. The topic's name is also same. Bill sent, fourth topic पे पहुंच गए हम चैप्टर के. Bill sent for collection, right? So again we have drawer, drawee and bank. क्योंकि बैंक is offering the service to you, तो फिर से 3 पार्टीज हैं. ठीक, पहली एंट्री सेम ड्रॉर के बुक में जो होती है BR अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉई, और ड्रॉई की एंट्री करेगा ड्रॉर अकाउंट डेबिटेड टू BP. अभी तक बैंक तो एग्जिस्टेंस में नहीं आया. ठीक, अब मेच्योरिटी से 1-2 दिन पहले ड्रॉर को लगता है कि इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी टू कलेक्ट दीज मेनी बिल्स, तो वो अपने बिल्स को बैंक को भेज देता है. तो आपने एक नया अकाउंट ओपन करना है विच वी कॉल बिल सेंट फॉर कलेक्शन. जो टॉपिक का नाम है वही अकाउंट ओपन करना है. बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिटेड टू BR, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. ड्रॉई कोई एंट्री नहीं करेगा बिल सेंट फॉर कलेक्शन. ठीक, अब बैंक विल इन्फॉर्म टू द ड्रॉर कि आपके बिल कलेक्ट हो गए हैं कि नहीं. ठीक है, जैसे ही बैंक हमें इन्फॉर्म कर देगा हमारे पैसे कहां पे ट्रांसफर हो जाएंगे, हमारे अकाउंट में, बैंक के में जो हमारा अकाउंट चल रहा है. तो बैंक इज टू बी डेबिटेड एंड बिल सेंट फॉर कलेक्शन इज टू बी क्रेडिटेड. हमारे ना सिलेबस में बैंक चार्जेस की कोई एंट्री नहीं डाली, लेकिन अगर क्वेश्चन में दी हुई है, मैंने अभी बोला कि बैंक विल चार्ज सर्टेन अमाउंट फॉर यू फ्रॉम यू बिकॉज बैंक इज कलेक्टिंग योर बिल ऑन योर बिहाफ. तो बैंक इज प्रोवाइडिंग अ सर्विस टू यू, वेरी इंपॉर्टेंट सर्विस टू अ बिजनेसमैन. So in that case, if he is giving the bank charges, तो आपकी बुक में एंट्री में उसने लिखा हुआ है बैंक अकाउंट डेबिटेड बैंक चार्जेस अकाउंट. तो आप बैंक चार्जेस आपके लिए एक एक्सपेंडिचर होगा. बाय फॉलोइंग द नॉमिनल अकाउंट ड्रॉर कैन डेबिट बैंक चार्जेस इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट आल्सो. सो लेट मी टेल यू थर्ड पार्टी की बुक में भी उसने किया हुआ है. I was telling you bank charges, he is writing in your book collection charges. If it is given in the question, you will be debiting. ड्रॉई को फिर से कोई फर्क नहीं पड़ता, ड्रॉई ने सिर्फ मेच्योरिटी पे क्या करनी है, पेमेंट करनी है. सो नाउ व्हाट एंट्री द बैंक विल पास हियर. बैंक की एंट्री पास करेगा. जब बैंक हमारे बिल्स की कलेक्शन कर लेगा तो बैंक लिखेगा कैश अकाउंट डेबिटेड टू कस्टमर, क्योंकि बैंक के लिए वो कस्टमर क्या है, लायबिलिटी है. बैंक विल बी क्रेडिटिंग द कस्टमर बिकॉज बैंक इज कलेक्टिंग ऑन आवर बिहाफ. मान लो कस्टमर का नाम अमर है तो ही विल बी राइटिंग अमर है टू. अगर बैंक ने आपसे कलेक्शन चार्जेस लिए हैं, जैसे बैंक की बुक में डिस्काउंट क्रेडिट होता था, डिस्काउंट इनकम हुआ करता था बैंक के लिए, उसी तरह से बैंक के लिए कलेक्शन चार्जेस भी क्या है, इनकम. सो वट एवर कैश, फॉर एग्जाम्पल 5,000 आपके बिल का कैश कलेक्ट किया, 50 रुपए कहता मैंने काटने हैं 1%. ठीक, और आपको कितना देगा बैंक, 495. तो बैंक विल पास ओनली अ सिंगल एंट्री, दैट इज कैश अकाउंट डेबिटेड टू कस्टमर to collection charges. आम तौर पे I am again repeating the same sentence. He will not ask the third party's journal entries in numerical equation, but it can be asked in 1 mark question.
Like if the collection charges are being collected by the bank on, or in the case of bill sent for collection, will you debit or credit collection charges in bank's account? Then your answer will be, we will be crediting. ठीक है, यहाँ वो लाइन बनाता है, collection charges are always being debited in bank's book in case of bill sent for collection. True or false? Then your answer will be false, because these are not being debited, these are being credited in the books of banks. These are only to be debited in the books of drawer. Drawer के books में collection charges क्या होने हैं? Debit होने हैं. He wrote this thing in your book, and accordingly, if it is given, you will be debiting collection charges in your drawers book. Up, we are proceeding to the next topic. That is what we call dishonor of the bill. What is the meaning of dishonor of the bill? This is what cancellation of the bill due to the non-payment of the bill at time of maturity by the drawee. ड्रॉई मेच्योरिटी पे हमें पैसे की पेमेंट नहीं करता, जिसके कारण बिल क्या हो जाता है? कैंसल हो जाता है. So in that case, the drawer will be sending the messages telephonically, orally, text messages, in any way. He will be giving the reminder to the drawee that the maturity date has come, you just make the payment. But he is denying. In that case, हमारे drawer के पास right है उसे sue करने का. So drawer has a right to sue the drawee. Means drawer can file a case against drawee. Drawer can sue drawee. Why? Because drawee has given a written promise. भाई पंजाबी में बोलते हैं, वो मुकरेगा थोड़ी ना अपनी बात से, वो अपनी बात पे रहेगा उसे, क्योंकि रिटर्न में एक प्रॉमिस किया हुआ है. एंड वन थिंग मोर, जब रिटर्न में प्रॉमिस किया था और मैंने आपको एक फॉर्मेट समझाया था, लेफ्ट हैंड साइड पे एक रेवेन्यू स्टैंप भी लगी थी और उस रेवेन्यू स्टैंप पे उसने साइन करे हैं. किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर अगर रेवेन्यू स्टैंप लगी होती है तो वो लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है. इन दैट केस द ड्रॉअर विल गोइंग टू द एडवोकेट, ही विल बी फाइलिंग अ केस, और उस एडवोकेट को जो भी वो फी पे करता है उसे हम नोटिंग चार्जेस कहते हैं. Because that advocate or notary public will be noting down that case in his register, and accordingly the legal notice is to be sent to the drawee. अगर drawee के notice मिलने पे भी drawee payment नहीं करता, then it is going to be an offense. उसके against case चल सकता है कोर्ट में. But we are not related with the legal procedure. We are supposed to pass the entries in the books of drawer and drawee. Dishonor के 4 cases बनेंगे, जैसे आपके bill retained till maturity, discounting of the bill, then we were having your endorsement of the bill, and bill sent for collection. Bill sent of collection में dishonor आमतौर पे नहीं बनता, but we will be discussing all these 4 cases by tomorrow, whereby we will be discussing अगर simple case है तो क्या entry होती है, अगर dishonor का case है तो हम उसे कैसे cover करेंगे. So rest of the things we will discuss tomorrow. You can come up with your problems, and if I will be having a time, that way I will be taking certain questions from the back exercise.